Good morning, students. Today the topic is very important as we are discussing about applied respiratory physiology. Now, applied respiratory physiology forms an important link between the basics of respiration and clinical manifestations of respiratory disease. Supposingly, a patient comes to your OPD with respiratory symptoms. You advise him pulmonary function test to diagnose a respiratory disease. But you can analyze this PFT well only when you have the understanding of basic physiology principles of respiration as well as gaseous exchange. So, for satisfactory management of respiratory disease, one need to have a proper understanding of basic and applied aspects of respiratory physiology. So, here we will be studying about certain basic things. So, let's start with eupnea. The first figure you are seeing here is a normal respiratory rhythm with a normal rate, rhythm and depth of respiration. You call it eupnea or the normal respiratory rhythm. Now we will be comparing all the rhythms and patterns in light of this normal respiratory rhythm. Now abnormal patterns are seen when wherever is a change in environment or there is a disease affecting the respiratory system, cardiovascular system or the brain. So now let's see tachypnea, the next diagram. This is increase in respiratory rate. डायग्राम्स हो सकता है इतने परफेक्ट नहीं बन पाए, लेकिन टेकेपनिया में टाइडल वॉल्यूम उतना ही रहता है, ओनली इट इज़ द रेट विच इंक्रीजेस. द टाइडल वॉल्यूम डजेंट शो अ मच वेरिएशन. So 99% of the time the tachypnea is associated with respiratory disease. अगर आपने ओपीडी में बैठ के ये कहा है कि किसी को रेस्पिरेटरी इलनेस है एंड और आपको टेकेपनिया if you say कि the person is not having a respiratory disease and you find tachypnea, then you should revise your diagnosis because tachypnea is 99% associated with respiratory disease. So if you are finding tachypnea and you are saying the person is not having respiratory disease, you should revise your diagnosis. Then the next diagram you are seeing is of bradypnea, where the person is showing a respiratory rate which is less than the normal. Then we come to apnea. The straight line which is showing you is the absence of any respiratory activity. So apnea refers to the temporary cessation of breathing. There can be various reasons for apnea. In the stenography class, we have already discussed about the deglutition apnea. So there are various reasons which we'll be studying in this lecture subsequently. But here the straight line shows the apnea. During apnea, two important things happen. Because you are not taking in any gas, you are not exhaling any gas. Cells are doing metabolic activities at their normal speed. So gradually during the apnea, the PO2 level decreases and the PCO2 level increases. And a point comes where the CO2 is accumulated so much that it produces a respiratory drive and the person starts breathing. ये हमने स्टेथोग्राफी की क्लास में भी करा था कि ब्रेकिंग पॉइंट आता है CO2 के लेवल्स जब इंक्रीज बढ़ हो जाते हैं और फिर रेस्पिरेशन स्टार्ट हो ही जाता है, चाहे आप कितना भी ब्रेथ होल्ड करना चाहें. तो टू थिंग्स विच हैपन इन द एपनिया आर दैट द PO2 लेवल ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड द PCO2 लेवल increases, and CO2 has a very strong respiratory drive. Then the next diagram you are seeing is of hyperapnea. Hyperapnea is increase in the rate as well as in the force of breathing. The tidal volume also increases and the rate also increases. You call it hyperapnea. Then there are two another terms, hypoventilation and hyperventilation. Hypoventilation is
decrease in the rate and the force of respiration, whereas the hyperventilation is increase in the rate and the force of respiration. So whenever we hyperventilate, the hyperapnea is produced. If we do the recording of chest movements during the hyperventilation, we will find that the graph produced is similar to the hyperapnea. They are almost synonym to each other. Then there is another term which is dyspnea. Dyspnea is difficulty in breathing or the breathlessness. Then we come to periodic breathing. Periodic breathing refers to a specific respiratory pattern which is characterized by alternate periods of respiratory activity and apnea. नॉर्मल रेस्पिरेटरी एक्टिविटी दिखेगी या इरेगुलर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी दिखेगी, और एक पीरियड आएगा कि जब कोई रेस्पिरेटरी एक्टिविटी नहीं होगी, एपनिया होगा. और जैसे ही CO2 एक्यूमुलेट होगी, अगेन यू विल फाइंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, देन अगेन यू विल फाइंड एपनिया. तो ऐसे ऑल्टरनेट पीरियड्स होते हैं रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के और एपनिया के, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक ब्रीदिंग. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एपनिया, I told you कि we will discuss it in detail in this class. We have already seen voluntary apnea in the lab. जब हमने स्टेथोग्राफी का आपको प्रैक्टिकल दिखाया है, उसमें हमने ब्रेथ होल्डिंग प्रैक्टिकल आपको दिखाया था. तो जो ब्रेथ होल्डिंग थी, इट वॉज अ वॉलेंट्री एपनिया. नाउ एपनिया आफ्टर hyperventilation is also seen. When you do hyperventilation for a longer time, what happens? You take in lot of oxygen, but you breathe out much of the कार्बन डाइऑक्साइड. तो ग्रेजुअली जो है CO2 के रेट्स रिड्यूस होते चले CO2 के लेवल्स रिड्यूस होते चले जाते हैं. CO2 washes away and the apnea is produced. Now this apnea continues till the carbon dioxide again accumulates in the body and the respiratory drive is again initiated by the CO2. सो एपनिया आफ्टर हाइपरवेंटिलेशन, आपने बहुत तेज़ सांस ली, आपने काफ़ी सारा CO2 वॉश ऑफ कर दिया. एक टाइम आया कि आपका ना चाहते हुए भी इनवॉलेंट्री एपनिया हो गया, और वो एपनिया आप चाहे जितना भी कोशिश करो, यू वोंट बी एबल टू ब्रीथ अनलेस एंड अनटिल द CO2 accumulates up to such a level that again you reaches at a breaking point and you yourself starts breathing. Then comes the deglutition apnea. Deglutition apnea occurs reflexly during the swallowing. It is of the duration of 0.5 second, seen in the pharyngeal stage of swallowing. The food stimulates the sensory nerve ending, the 5th, 9th and the 10th cranial nerve around the pharynx. These nerve impulses via the swallowing center inhibits the respiratory center and the deglutition apnea is produced. One thing more happens simultaneously. There is closure of glottis. The glottis is the opening between the vocal cords. So both of these activities, they prevent aspiration of food and fluid into the lungs. Then another kind of apnea we find is, you will read in your pediatric books, breath holding attacks. These are the attacks of brief period of apnea which occurs in infant and young children and are precipitated by emotional distresses like fright, frustration, pain, anxiety. माँ ने बच्चे को डांट दिया, कोई टॉय छीन लिया, बच्चे को एंगर आया, छोटा बच्चा है, and suddenly the child starts crying, and then suddenly he holds his breath, and then he may become limp, may become blue and lose consciousness. These attacks last for a very brief period and recovery is rapid and complete. These attacks are usually harmless and they stop themselves by the age of 3 years. Then comes the sleep apnea. Cessation of breathing for a brief period during the sleep, which lasts for 10 seconds or longer, is known as sleep apnea. And this may occur up to 300 to 500 times each night.
Now these sleep apnea we divide into two categories: obstructive sleep apnea and central sleep apnea. Now first we will discuss about the obstructive sleep apnea. एज द नेम इज टेलिंग इटसेल्फ कि कोई ना कोई चीज़ है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रही है. नाउ you all know that the muscles of the pharynx, they keep the upper respiratory passage open to allow the air to flow into the lungs during the inspiration. अब क्या होता है कि जब बंदा सोता है तो ये मसल्स रिलैक्स होती हैं, फेरेंजियल मसल्स, पर फिर भी ल्यूमेन पेटेंट रहता है एंड वी आर एबल टू अलाउ द ईजी पैसेज ऑफ गैसेस टू आर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. पर इन पर्सन्स हु आर हैविंग कंजेनाइटली अ नैरो पैसेज or who are very obese or have a short neck and they have a lot of fat deposited in their behind the pharyngeal muscles, these persons undergo obstructive sleep apnea. जैसे ही ये सोए मसल्स रिलैक्स हुई और मसल्स रिलैक्स होकर थोड़ा सा कोलैप्स हुई, पैसेज ब्लॉक हो जाता है, स्नोरिंग शुरू होती है, लेबर्ड ब्रीदिंग होती है, उसके बाद सडनली एपनिया हो जाता है. अब जैसे ही एपनिया हुआ, सेल्स मेटाबोलाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन का कंजप्शन होता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन होता जा रहा है. अप टू अ लेवल द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स रीचेस टू अ हायर लेवल एंड द रेस्पिरेटरी ड्राइव सडनली कम्स एंड द पर्सन स्टार्ट्स ब्रीदिंग. फिर जैसे ही वो सोएगा, अगेन दीज साइकिल्स कीप ऑन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग ड्यूरिंग द स्लीप एंड these persons they usually wake up with headache and sleepy during the day. तो और ये 300 to 500 times तक ऐसा हो जाता है. Now what is the treatment? एक तो we can surgically remove the excess fat tissue at the back of the throat and we can do uvulopalatopharyngoplasty. I am again repeating, the surgical process we can do is uvulopalatopharyngoplasty. Then another procedure we can do is nasal ventilation with continuous positive airway pressure. So this was about the obstructive sleep apnea, and then now we will discuss central sleep apnea. Now the central sleep apnea occurs when the neural drive to the ventilatory muscles, the inspiratory muscles, transiently stops, and this is seen in the conditions which cause damage to the central respiratory centers, है ना. And we can also find this condition when there is abnormality of the respiratory neuromuscular apparatus. So the two conditions where we find this central sleep apnea are when there is the conditions causing damage to the central respiratory centers or when there is abnormality of the respiratory neuromuscular apparatus. Now the apnea occurs, again the PO2 decreases, the PCO2 increases. As the PCO2 level rises, there is stimulation of respiration. In most of the patients, the cause of the central sleep apnea is unknown. So sometimes you can get a question on to differentiate between the central sleep apnea and obstructive sleep apnea. Now we will come to an important topic, that is periodic breathing. Now as the new MCI curriculum has come and the pattern of the paper has been revised and you usually get problem based learning question. तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्वेश्चन में हम आपको न्यूरल रेगुलेशन से क्या बना सकते हैं कि लाइक वी कैन गिव यू एनी एबनॉर्मल पैटर्न, वी कैन आस्क यू टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड देन वी कैन आस्क यू अबाउट द न्यूरल रेगुलेशन और द केमिकल रेगुलेशन. सो हियर यू आर सीइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक ब्रीदिंग. तो पीरियोडिक ब्रीदिंग में जो ये इंपॉर्टेंट टाइप की ब्रीदिंग है, दिस इज शेन स्टोक्स ब्रीदिंग. हियर यू कैन सी कि धीरे धीरे रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बढ़ रही है ना, टाइडल वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक हाईएस्ट लेवल तक गया, अब फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होता गया, फिर एपनिया आया, फिर ये धीरे 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 बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, फिर रिड्यूस हुआ, फिर एपनिया आया. तो
इसीलिए हम इसे पीरियोडिक ब्रीदिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट पीरियड्स हैं रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के और एपनिया के। बट यू सी देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ पैटर्न, है ना, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न से ये चलती है। इसीलिए ये इट अकर्स एट द रेगुलर इंटरवल and the tidal volume increases gradually, reaches maximum and then decreases. So you call this pattern as a waxing and waning pattern. मैंने एरो बना के बना भी रखा है waxing and waning, and we say कि we find diamond shaped complexes in this pattern. Now this chain stroke breathing can be found physiologically in high altitude during the sleep, and you can even find this periodic breathing during your stethography practicals. We also find it in congestive heart failure and uremia. So you must know कि this type of breathing is found in which conditions, and आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए ताकि आप इस ब्रीदिंग पैटर्न को डिस्क्राइब कर सकें। देन वी कम टू दी बायोट्स ब्रीदिंग। यू सी इसमें अगर दोनों पैटर्न्स में आप डिफरेंस देखो तो यहाँ कितनी प्रिडिक्टेबिलिटी है, आपको पता है साइकिल्स कैसे रिपीट हो रहे हैं। और बायोट्स में आप देखो बिल्कुल इरेगुलर पैटर्न है, एपनिया के पीरियड्स हैं, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के भी ऑल्टरनेट पीरियड हैं। It is also an example of periodic breathing, but here there is no predictable pattern. ये बिल्कुल irregular है ना, you cannot predict it. So here you find no waxing and waning phenomena. Here you find irregular respiration and apnea, and this type of breathing is never found physiologically. It is usually seen in cases of meningitis, head injury and central medullary lesions. So you see कि कितनी deadly diseases हैं, meningitis, head injury and central medullary lesions where the Biot's respiration is found. आपको जब हम प्रैक्टिकल ह्यूमन लैब का वाइवा लेते हैं तब भी हम आपसे बायोट्स ब्रीथिंग और चेन स्ट्रोक्स का डिफरेंस पूछते हैं। इसके अलावा हम थेरेटिकल क्वेश्चंस में भी आपसे चेन स्ट्रोक और बायोट्स का डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो यू मस्ट बी थरो विथ चेन स्ट्रोक एंड बायोट्स ब्रीथिंग। Both are the example of periodic breathing. One has a regular and predictable pattern, another has a irregular pattern. Cheyne stroke can be found in physiological conditions also, but Biot's is never found in physiological conditions. Then another type of breathing I would like to show you is the Kussmaul breathing. Here it is an example of hyperapnea. ये टिपिकल ग्राफ है हाइपर एपनिया का। मेरा पिछला वाला ग्राफ इतना अच्छा नहीं बना था जितना ये बना है। हियर यू कैन सी द रेस्पिरेटरी रेट इज इंक्रीज्ड एज वेल एज द टाइडल वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। सो डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग इज कुस्मॉल ब्रीदिंग। इवन वी कैन गिव यू दिस इन एग्जाम। हम आपको बोलते हैं कि एक पेशेंट है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का और वो एडमिट हुआ है आईसीयू में, उसका ब्रीदिंग पैटर्न देखा गया तो वी फाइंड दैट द रेट एंड द टाइडल वॉल्यूम बोथ आर इंक्रीज्ड एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग एंड डिस्कस द न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो किसी भी तरीके से हम आपको कोई भी ब्रीदिंग पैटर्न दे सकते हैं। We can give you tachypnea, bradypnea, hyperapnea, Biot's, चेन स्ट्रोक्स, और फिर उसके बाद PBL में हम पूरा न्यूरल रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन आपसे पूछ सकते हैं। Now Kussmaul breathing is usually found in diabetic ketoacidosis and we have a mnemonic for it कि कहाँ कहाँ हमें Kussmaul breathing मिलती है। So the mnemonic goes like makeup list। तो लिस्ट में हम सिर्फ L लेते हैं, बाकी मेकअप पूरा लेते हैं। So M is for methanol poisoning, A is for aspirin intoxication, K is for ketoacidosis, E is for ethylene glycol ingestion, U is for uremia, P is for paraldehyde administration and L is for lactic acidosis. तो यहाँ जब हम कीटोएसिडोसिस की बात करते हैं वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस and Kussmaul breathing is a frequent finding in diabetic ketoacidosis. So this also forms an important PBL कि DK का पेशेंट था, हाइपरएपनिया मिल रहा है, कौन सा ब्रीदिंग पैटर्न है and which are the neurons which regulate the normal breathing pattern, elaborate their functions. So this is all what we have read today. I am again repeating the pattern. This is Kussmaul breathing,
हाइपर एपनिक पैटर्न होता है, बायोट्स का इरेगुलर होता है, एग्जाम्पल है पीरियोडिक ब्रीदिंग का, पर एब्सोल्युटली इरेगुलर होती है, बीच में एपनिया के पीरियड्स होते हैं और इरेगुलर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है, इवन एपनिया का ड्यूरेशन भी फिक्स नहीं होता. Then you have Cheyne Stokes breathing, which you can find physiologically as well as pathologically. You find waxing and waning patterns. You find diamond-shaped complexes. It has a very regular and predictable pattern. Then this is apnea. We have discussed about the deglutition apnea, the voluntary apnea, and apnea produced due to hyperventilation. Then we have obstructive sleep apnea, then central sleep apnea, deglutition apnea. So if you get short note on apnea, you have to write all these kinds of apnea. Then we have definitely breath holding spells also, वो भी एक तरीका के one of the kind of apnea. Then these are the normal patterns which you should know. The normal respiratory rate is 12 to 16 with the normal regular rhythm. इससे कोई भी वेरिएशन होता है, that means there is certainly a disease present pertaining to respiratory physiology. So all for today. I'll be uploading another lecture in which I'll be discussing more about the neural regulation. हम जे रिसेप्टर्स वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे. So very soon I'll be uploading the next lecture about the J receptors and everything about the neural regulation. Thank you.